है तो उसकी प्रॉब्लम्स बदलती हैं और कुछ प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहती हैं पर कुछ वैसी रहती है। तो पहला तो है इग्नोरेंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन और ह्यूमैनिटी, क्योंकि इग्नोरेंस मीन्स समवन इज गेटिंग सप्रेस्ड एंड समवन इज सप्रेसिंग यू, वेदर इट्स अ डिजिटल इज सप्रेसिंग यू। अगर आज की डेट में देखा जाए तो आपने देखा होगा बहुत सारा मूवमेंट जो ये इस बात का है कि जो बच्चों को ये गैजेट्स का प्रॉब्लम चल रहा है, ये एक अलग प्रकार की एडिक्शन आ गई है। इस पे आर्य समाज काम कर रहा है। तो आर्य समाज इज़ नॉट अबाउट कास्ट सिस्टम को रिमूव करने की बात कर रहा है, वो तो कर ही रहा है क्योंकि वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी वो प्रिवलेंट है बहुत सारे पार्ट्स में। बहुत सारे पार्ट्स में अभी भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के घर में नहीं जा सकती है, अभी भी वो बहुत सारी वो है। तो इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम बदलती जाती हैं एंड आर्य समाज टेक इट्स स्टांस डिफरेंटली बिकॉज वी ऑल अबाउट serving the humanity and whatever is making a person away from the nobility we are working against that। तो पहली जो समस्या ये है, ऑफ कोर्स जो ड्रग्स की प्रॉब्लम आपको पता है हर जगह रहती है। आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे मैंने कहा, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाइए, वेस्टर्न वर्ल्ड में छोड़िए आप इंडिया में भी देख लीजिए, इंडिया में भी बहुत सारा आइडेंटिटी क्राइसिस है क्योंकि हम अपने रूट से जुड़ नहीं रहे हैं यूथ, और वेस्टर्न कल्चर में वो जाता जा रहा है तो उसको अपने पे आत्मविश्वास की कमजोरी होती है, उस पर हम काम करते हैं। ऑफ कोर्स पहले इग्नोरेंट औरतों को, वुमेन्स को पढ़ाया नहीं जाता था, पर आज वो भोगवाद की संस्कृति में खुद भी बहती जा रही है और पुरुष समाज भी उसको उसी ढंग से देखना शुरू हुआ। तो एक देखिए तरीका बदला है लेकिन शोषण वैसे का वैसा ही है। और आज भी के ये जो अभी पहले कास्ट सिस्टम होता था वो आज भी है, लेकिन अब मनी जो धनवान है वो अब जो है वो क्रिएट करते हैं। तो अभी वो सारी की समस्याएं थोड़ी सी बदलती जाती हैं, लेकिन आर्य समाज इज वेरी रेलिवेंट इन एवरी फॉर्म एंड प्रिपेयर्ड टू एवरी फॉर्म। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर ये बताएं कि स्वामी विवेकानंद ने जब 1873 आप अगर पब्लिक डोमेन में देखेंगे तो बहुत सारे हैं ऐसे। आज भी आप पब्लिक डोमेन में देखिए तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो 70 to 80% हम ये लेके चलते हैं कि वो वहाँ से थे। अब ये ठीक है कि कुप्रचार भी बहुत है समाज में, तो हर प्रकार का कुप्रचार भी चलता रहता है, परंतु ऐसा नहीं है कि आप देखिए आज की डेट में डीएवी संस्थाएं कितनी प्रबल है। तो आप बताइए कि क्या वो पब्लिक डोमेन में नहीं है? वो पब्लिक डोमेन में है। कोई भी ज्वलंत इशू आता है सबसे पहले स्टेटमेंट हमारे आर्य समाज से आती है, वो पब्लिक डोमेन में है। सो आई थिंक वी नीड टू फैक्ट चेक कि वो बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन है। डेफिनेटली आई विल टेक दैट एज अ सजेशन टू दैट वी विल वर्क हार्ड ऑन दैट कि हम उसको और ज़्यादा से ज़्यादा भूरे जी वांट तो मैंने भी वो देखी है वीडियो और पता चला कि वो किसी और धर्म के लोग हैं जी जो उसको बदनाम करने में लगे हुए। जैसे कि भाई ने कहा कि उसके भी केस चलते हैं, सब कुछ होता है। आई थिंक इट्स अ बिगर कंस्पिरेसी जिसके तहत ये सारा कुछ होता है। अब इसकी डिटेल्स जो है वो पब्लिक डोमेन में भी है कि उनको पकड़ के पूछा गया, पता चला कि वो किसी और नेम है उनका। जब आधार कार्ड चेक किया गया तो वो हिंदू नहीं थे, वो आर्य समाज तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो ये बात ठीक है, जब प्रोडक्ट अच्छी होती है तो उसके नकली जो प्रोटोटाइप्स हैं वो मार्केट में आ जाते हैं, पर उसके लिए हमको दोषी नहीं ठहराया जा सकता जी। उसके लिए दोषी वही हैं जो इस असली चीज के नकली घी काफी बिकता है, इसलिए घी, फिर शुद्ध घी, फिर शुद्ध देसी घी। तो धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाती है। तो उसके लिए भी आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से लीगल प्रोसीडिंग करती है, सब कुछ करता है, तो वो होता है। पर वो आर्य समाज का कोई अधिकृत केंद्र नहीं है, वो इस बात को समझिए। वो बदनाम करने का और बल्कि मैं ये कहूँ लव जिहाद को सपोर्ट करने का ही एक हिस्सा होता है। थैंक यू। One who works on the ground and serves our people. One that is able to be a soldier on the ground. We don't need to be up on the stage. And Aryan usually, look at Swami Dayanand ji. He worked and walked alone, without an institution behind him, tirelessly, persevered and persisted, and led India to where India is today. We may have had many people in between, but who was the one that walked and liberated our people with knowledge? Swami Dayanand ji. So an Arya revolutionary is one who is able to serve the need of the people, not self-interest. But revolution alug, the missionary is that different part. Missionary. Still, what is a missionary? One is able to serve our people, who serves towards the mission of the ideals of those missions.
What is the ideal? What are the ideals of the Arya Samaj? Those are the 10 principles which Swamiji has given us. To be able to do good to the world. That's the prime objective of the Arya Samaj. To be able to promote the Vedic wisdom so that people are able to get that knowledge. So, Swamiji, I think somewhere. And I'm quoting, आर्य समाज ने जितना काम किया उसको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला. If a prime minister of Modi, of such a status prime minister, is recognizing that, and I think that concludes the answer to your question. उन्होंने खुद अपने मंच से स्वीकार किया. He doesn't have to be. This is not a political rally. He's not pleasing anyone. He's recognizing, and I think you should go back, check that will answer your question and conclude your answer to your question. Second question भाई ने पूछा कि current problem क्या है? Challenges क्या है? मैंने आपको बताया कि जो पुराने challenges थे वो अपने different form में अभी के ऐसे पड़े हैं. पहला, inequality अभी भी prevail करती है. दूसरा, स्त्रियों के प्रति जो भाव है पुरुष समाज का या समाज का वो थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है. मॉडर्निटी के नाम पर भोगवाद की वही संस्कृति है, उसने थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म लिया है. एजुकेशन बिकम्स पार्ट ऑफ अर्निंग द मनी, नॉट चेंजिंग द माइंडसेट. और औरत अपने आप को भी भोगवाद के रूप में दिखा रही है और पुरुष उसको अभी भी वैसा का वैसा ले रहा है. तो जैसा पहले इनइक्वालिटी और मैंने बताया, जैसे मनुष्य सेवा में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो अभी भी बदले नहीं हैं. हाँ, ये जरूर है कि सैलरी को प्राप्त करने के लिए, वेतन को पाने के लिए जो एजुकेशन दी जा रही है वो सिर्फ एक सैलरी सर्वेंट को पैदा कर रहे हैं, परंतु क्या नॉलेज इसी के लिए नहीं होती? नॉलेज आपकी डिग्निटी को और आपकी ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए होती है. आज भी वही चैलेंज बने हैं और आर्य समाज उस क्षेत्र में अच्छे से काम कर ही रहा है मॉरल एजुकेशन के रूप में. और एक बात मैं जो मानता हूँ पर्सनली वो है कि हमेशा आर्य समाज इंस्पिरेशन रहा है किसी भी लीडिंग प्रॉब्लम के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए उसने हमेशा इंस्पिरेशन दिया है, उसने फोरफ्रंट पे काम किया है. तो आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी फर्दर. एक सवाल ये है, Herd that was founded by the Arya Pratinitis of South Africa was known as the Arya Anahat Ashram or Aryan Benevolent Home. This institution was founded over 103 years ago, when the leaders of the Arya Samaj back then, in a country where apartheid was rife and oppression was rife, they found some of our people sleeping in a toilet, being beaten by a policeman because he tried to find shelter at a train station. But because they were Aryas, inspired by Maharshi Dayanand to fight for social justice, they couldn't see this happening. So they got into a meeting the next day and decided that no person who is looking for a home to sleep shall sleep in a toilet or in undignified circumstances. And thus the Arya Anahat Ashram was founded. Today, this institution is one of the largest in the southern hemisphere, caring not only for over 800 seniors and elders, those who are unable to care for themselves at the last tender age of their life, but also takes care of our children who have no parents, our orphans, that need love, that need care, that need direction in life, that need education, access to education. Our women who are abused at their home due to domestic violence have no place to go. We have a home for them at the campus of the Aryan Benevolent Home. This institution is thriving and is based in Chatsworth and continues to care for our aged, for our children and abused women. Subsidies are not only given by the Department of Social Development, but also sponsored by the community of South Africa. The Arya Samaj continues to pioneer and find innovative ways to ensure that the home and its services grow from strength to strength. Every year, we have a message of inspiration from Amitabh Bachchan ji, who came to South Africa many years ago and was so inspired by the work of the Aryan Benevolent Home that every year when we have our main fundraising drive, he sends us a message of support so that South Africans can remember that it is our beholden duty, as taught by Maharshi Dayanand ji, to serve particularly our elderly and then our children and women.
Just as a brief also on South Africa, part of why the Arya Samaj thrived in South Africa. When the Arya Samaj was formed in 1875, many of the Indians in 1860 were brought from Bihar state, UP state and Chennai to South Africa to cultivate the sugarcane plantations. We came here, our Arya missionaries, the first one being Bhai Parmananji, came to South Africa, saw the conditions of our people and brought the light of knowledge, wisdom and courage as taught by the Arya Samaj. With that inspiration, Arya Samaj grew so much so that today we are free because Arya Samaj was part of the struggle in liberating our people and continues today to ensure that we work towards social cohesion of every race, every language, every culture in South Africa, because as Acharyaji said, Manur Bhavajanaya Devyam Janam, O man, be human, and create a society of divine enlightened people. Across the board, no matter the language, no matter the religion, Vedas is for all. And we continue through our projects, serving without that discrimination, teach our people that the Arya Samaj philosophy is truly open to every human being. It is their birthright, because Vedas is knowledge, knowledge for all. I pass over to Bhuvneshji. You can see worldwide, the Arya Samaj is actively involved in tackling current day issues and burning challenges in our society. When Maharshi Dayanand formed the Arya Samaj, as a revolutionary, he formed it to cut the shackles of the chains that bound our people, both spiritually and socially. And 150 years later, the Arya Samaj continues to tackle social issues on the ground, not only perform bhashans, which are important, but most importantly takes those bhashans and puts them into practice. The 10 principles designed by Maharshi Dayanand are calls for us all, to respond to the need of the hour and uplift our people worldwide. All the Arya Samajas internationally are tackling issues, like you heard, such as gender-based violence, environmental changes and climate change, issues regarding peacekeeping efforts. United Nations, which Yogesh Aryaji will speak about, is one avenue in which the Arya Samaj can literally and progressively be a voice of change and reason. Because the Arya Samaj and its philosophy is an antidote to the challenges we face in society today. Whether it be equality of our people, the upliftment of our women and children and education of our women and children, Arya Samaj has been at the forefront in educating our women and children. Yet today, we still see global policies that are suppressing our women, that are suppressing the education of our children. And Arya Samaj is at the forefront in tackling them. We are proud to inform you that at this Mahasammelan, all the global leaders are committed to a strategic global initiative that looks towards the next 50 years, ensuring that the Arya Samaj contributes to certain specific initiatives that tackle the challenges we face. These are, as I said, environment and climate, social justice issues, issues facing all our peacekeeping efforts when it comes to individuals and countries that are facing war, that are facing where their governments are suppressing them in certain ways. We are there at the forefront for peacekeeping efforts. The Arya Samaj and its philosophy, as taught through the Satya Prakash by Maharshi Dayanand 150 years ago, is as ever relevant and ever alive. It is a socially transforming movement that doesn't just focus on religious issues, but takes spirituality into the forefront, into the ground to uplift our people. One of the projects done in South Africa, for example, is Project Tirti. One thing that human beings cannot live without is water. Water is the elixir of life. So as part of our contribution to ensuring that those without access to water in the most rural of areas, the poorest of the poor, the most marginalized, the Arya Samaj sinks boreholes in this area without any cost associated to it, so that our communities that have no access to water can now flourish. Schools of which the children walk barefoot
not knowing where the next drink of water, the next drop of water is going to come from. They have now access to those water, and over 10 boreholes have been sunk in South Africa. Like that, other institutions worldwide, outside of Bharat, have committed to the cause of social upliftment, have committed to the cause of serving our people, the poorest of the poor. For the next 150 years, the Arya Samaj has a plan which will really shake the foundations of tomorrow. With that, I'll pass to Yogeshji, who will enlighten you on our endeavors for the United Nations and how Australia is making an impact in the Arya Samaj worldwide.